welcome to BitWorld and today we'll continue our recursion topic and आज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में एक बार रिकैप कर देता हूँ। हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास एक फिबोनाची सीरीज है, फिबोनाची सीरीज जिसमें कोई भी पोजीशन पिछली दो पोजीशंस का सम होती है। फॉर एग्जांपल 1 and 1 2, 1 2 3, 2 3 5, 3 5 8, 5 8 13 एंड सो ऑन। उसके बाद हमने एक फंक्शन लिखा था जो रिकर्सिवली किसी भी पोजीशन के ऊपर कौन सा नंबर आएगा ये कैलकुलेट करा था। उसके लिए हमने दो तीन चीजों का ख्याल रखा था। एक रिकर्शन के अंदर हमारे पास सेफ्टी कंडीशंस या बेस कंडीशंस होती हैं। उसके बाद हमारे पास एक लॉजिक पार्ट होता है जो रिकर्शन को फर्दर कॉल करेगा, कॉलिंग द सेम फंक्शन इटसेल्फ, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिकर्जन। फिर हमने देखा था कि हमारे पास फिबोनाची सीरीज के लिए रिकर्सिव कॉल में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बनेगी और ऑर्डर ऑफ 2n और ऑर्डर ऑफ n क्यों आया, क्योंकि हर एक कॉल अपने आप में दो जगह डिवाइड हो जाती है। तो इतनी कॉल्स अगर होंगी तो उनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ऑर्डर ऑफ 2n का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। क्योंकि अगर आप देखो तो एक कॉल 2 में डिवाइड हुई, 2 4 में, 4 8 में एंड सो ऑन। तो हर लेवल पे इफ यू सी 201 इसमें 2 raised to power 1, इसमें 2 raised to power 2, इसमें 2 raised to power 3, यानी हर बारी हमारे पास ऑर्डर ऑफ 2n ऐड होकर बदल जाता है। सिमिलरली अगर हम बात करें स्पेस की, क्योंकि एक बारी में एक ही सेट ऑफ कॉल्स स्पेस में होंगी, मेमोरी में होंगी, इसलिए ऑर्डर n है। क्योंकि एक बार ये होगी, फिर ये कॉल, फिर ये कॉल, फिर ये कॉल, जब ये वाली कॉल रिजॉल्व हो जाएगी तब ये वाली कॉल आएगी, राइट। क्योंकि अगर हम इसको कोड वाइज देखें तो पहले ये जो कॉल्स होंगी ये रिजॉल्व होंगी, उसके बाद इसका नंबर आएगा। तो एक बारी में एक सेट ऑफ कॉल्स ही मेमोरी में होंगी, बाकी एग्जीक्यूट सारी होंगी लेकिन होंगी नहीं मेमोरी में उस टाइम पे, 1 by 1 आते चल जाएंगी। ये तो रिकैप था पिछले पार्ट का। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 में कि ये जो सॉल्यूशन हमने देखा था पार्ट 1 में, ये सॉल्यूशन टाइम बहुत ज्यादा ले रहा है। विल ट्राई टू रिड्यूस दिस टाइम, और इसको रिड्यूस करने के लिए हम एक टेक्निक यूज करेंगे, मेमोइजेशन। मैं एक बारी मेमोइजेशन पे फोकस करने से पहले एक बारी ये प्रॉब्लम को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये मेमोरी ज्यादा क्यों ले रहा है और हम इसको मेमोइजेशन के थ्रू कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास ज्यादा इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ कॉल्स ज्यादा है। तो अगर हम नंबर ऑफ कॉल्स को लिमिटेड कर दें तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो जाएगी। अब इसको एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं हमारे पास हमें निकालना है एक नंबर, लेट्स से 5 को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 4th पोजीशन और 3rd पोजीशन में पता होनी चाहिए, राइट। सेम यही -1 -2, -1 -2। 4 को कैलकुलेट करने के लिए हमें 3rd और 2nd पोजीशन पता होनी चाहिए। 3rd को कैलकुलेट करने के लिए हमें 2nd और 1st पोजीशन पता होनी चाहिए, और 3rd को कैलकुलेट करने के लिए हमें 2nd पोजीशन और 1st पोजीशन पता होनी चाहिए। सिंपल। तब अगर हम इसको देखें तो 5 को निकालने के लिए हमें कितनी कॉल करनी पड़ी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉल्स। इन कॉल्स को मैं आगे फर्दर इसलिए डिवाइड नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये कॉल्स हमने यहां पे बेस कंडीशन में ऑलरेडी लगा रखा है, तो ये कॉल्स यहीं पे रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर मेरे पास अगर आप इसको इस तरीके से देखें तो 3 को हम 2 बारी कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर मैं इस कॉल को जब भी पहली बार एनकाउंटर हुआ या तो यहां पे या यहां पे, अगर मैं इसको मेमोराइज कर लूं, इसको मैं मेमोरी के अंदर इस 3 की जो वैल्यू है कि 3rd पोजीशन पे क्या आएगा उसको मैं सेव कर लूं, तो इस कॉल को मैं यहीं पे खत्म कर सकता हूं। Whenever this call will happen, I'll check in the memory and I'll return. These 2 calls will not be there, right? Now this is 5. If it is a bigger number, then we can save lot many calls. Now let's try to write the code for this approach. Okay, let's try to write the code for this approach.
एंड विल सी कि हमारे फंक्शन में क्या क्या चेंजेस आए। विल सी हमारे फंक्शन में क्या क्या चेंजेस आए। अभी हमारे पास जो फंक्शन था उसमें बेस कंडीशन और लॉजिक था। नाउ वी आर गोइंग टू यूज मेमोराइजेशन एंड वी आर सेइंग दैट आवर फंक्शन is FIBO again. Now where we are going to store the value? We are going to store the values in a array of integers. Simple array of integers, and I am saying कि number के साथ with n we are also passing an array of integer. Okay. Let me rewrite this. There is a function FIBO with n, and we are also again now passing an array of integer. Let's call it as array only, or it's an array of integer, and this time again we are going to return the value, the integer. Now how we are going to use it? We are saying agar we have a value in this array, then we'll simply return that value. But if we don't, then we can say we don't have that value and we'll proceed. Now we are saying what now this array will be of length. See, understand this part. If it is n, this array should be of at least this length. If this is n, then we can simply say that if you want to check the value of at this position, this is 1, 2, 3, 4, 5, then the length of this array should be 5. Okay, and we'll simply say that whatever position we have, at that position if that value exists, then we'll return, otherwise we'll calculate that value and also fill this array. So we'll simply say, now our base condition will remain same. Our base condition will simply remain same, that if n is less than 1, return 0. First condition. Second condition, we are saying if n is equal to 1 or n is equal to 2, simply return 1. Our base condition are same. Now comes the third condition, is if array at position n is greater than 0, return array n. Else we are simply saying return, we are simply saying that we know that now this position doesn't exist. Array of n equal to FIBO n minus 1 plus FIBO n minus 2. And okay, just a second. It will be now, since we have updated the call, we are saying FIBO of n minus 1 comma array plus FIBO n minus 2 array, and simply return array n. That's it. Now what we are doing is we are calculating the Fibonacci number at a position, but we are also using a memory place array
and we are first checking into that memory place. If we have the calculated number, then we are simply returning that number. We are not recalculating, we are not going the further recursion. But if we don't have it, we are filling that space. Here we are filling that space. Here we are simply, if I'll simply say, checking the number. And here we are filling the number. So it's like reusing the computed result, and here computing the result if we don't have it and storing it, right? So this is called memoization, where we are using the solution of sub problem to solve the bigger problem. And this whole concept where we are computing we are using the solution of sub problems is known as dynamic programming. This is what is dynamic programming is. This is called dynamic programming, where we are using these sub problems solutions to solve the bigger problems in a recursive nature. Then this is also known as dynamic programming. So I hope I am able to make you guys understand the memoization, what is dynamic programming, and how to implement the memoization in a solution. And now the most important part, after implementing all this, what will be the new time complexity, right? Because after all, we did all of this to reduce this part. Now, how much we have achieved? Now understand this part. Since if we look at this part, here we are calculating this, and this. Then we are calculating this. Now understand, this is one bigger and this is one minus. So this call will reduce the entire tree. If this is n and this is n minus 1, this is n minus 2, then this next call will be n minus 2. N minus 1 minus 1 will be n minus 2, and this entire tree will be skipped altogether. This call will make this entire call skipped. That means maximum in order of n, means maximum n calls. After calling this much, every call will skip one of the tree on the right side. For now, I am just assuming the left call is making first. As per our code, the left call is making first. This will fill the position and the entire right tree will be skipped. This one. So we'll be left with limited number of calls. A small extra. Maybe you can simply say that at every position one extra call will be there. But just one extra call will be there. This much. These will be skipped. One extra call will be there. So we can simply say that if the position is 0, then it's 1. If this is 1, this is plus 1. This is 2, this is plus 1. That's it, maximum. At every level, only one extra call is there. That's it. So the new time complexity is order of n, plus at every level there will be one extra call which will again be of order n. So it is order of 2n, which is again order of n. And I think it's a huge improvement, because order of 2 raised to power n to order of n is an improvement. But are we giving up anything on the space part? Yes, there is a little extra space we are using, but that space, since we'll see the previous space was order of n, and now we'll be using an array of n length to store. So now the space complexity will be, this is maximum space complexity I'm talking about. The space complexity will be order of n plus order of n, same, which is again order of n. That's it. So now space and time both are in order of n after implement the memoization thing. Guys, I hope I am able to make it clear. Please comment and let me know if you have any doubts. I'll try to improve myself. Please like and subscribe. Thank you so much.